You know, this very video, viewers, let me tell you, that shows how the fire spread from the basement kitchen to the upper levels. It shows how quickly the fire spread and how the ceiling just came crumbling down in just seconds, which again shows that it's highly inflammable material that was used to, in fact, construct the very levels. The very construction was done with inflammable materials, which is now being pointed out in these very notices that has come to the forefront, saying that this is illegal construction. And of course, additionally, there was no fire safety norms in place as well. So this is not just one violation that we are speaking of, but multiple violations that have been flagged time and again by the authorities, and yet no action had taken place in a club which is this well known in Goa. Let me now take you to how India Today spoke with a performer at the club. This is Christina, we are showing to you on our screens, who was performing at the time when the fire in fact erupted on this very level. And she in fact broke down while sharing her harrowing account of what exactly went down once they got to realize that the place was on fire. Let's listen in as we bring to you that very account of the exact moment when the fire broke out, when she was in fact performing on the stage in the nightclub. There were a lot of patrons also. We saw that a lot of people were present when the performance was going out. So was it like a chaos while leaving, or whether it was people helped each other and tried to come out? I don't know. I just ran, saw how people helped each other. I just pushed one woman, and one Wednesday, he got a shock, and I say, Jodi, run. What I remember in my mind. Everybody from your crew is safe, your team and everybody? My team is safe. Everyone is safe. Me include my team, my musician. Thanks God. Because there are a lot of performances must be coming up this month of New Year. You think that your team, before performing anywhere, would want to know from the club whether they are fire compliant or not, or such incidents should not take place at any other venue? No, nothing. Just prepare the performance and go. First performance is done, everything is good. And I go down, change. And when it suddenly start, when I run, my green room down, and I feel that I need to go and check the people, and someone pushed me like, no, not go down, because I really not understand how fast is it. I don't think so. Someone feel this, like everyone got shot. So actually the person who stopped you from going to the green room actually saved your life, because yes, the main fire was in the basement. It's a guy from my team, yes. I thanks him, thanks God. I don't have words. I just cried since yesterday. I don't know why. In the end, God saved my life. When I had my daughter, I just realized I'm at home. I'm here outside Birch by Romeo Lane, which is the restaurant bar that caught fire last night. The massive blaze has taken the lives of at least 25 persons. 25 dead has been confirmed. At least 5 more persons have been injured and are currently at the Goa Medical College Hospital. The governor of Goa has visited the hospital premises to meet the injured persons. We are awaiting a medical bulletin. I'm showing you the visuals of the area, the premises that has been burnt in the fire just last night. At least 25 confirmed dead. Many of them are staffers who were working at this particular restaurant. At least 3 are women. The cause of the fire is still officially not been confirmed, but videos are doing the rounds on social media, in the media,
where it seems that there may have been some sort of electrical fault during a party that was going on, a private event that was going on here last night. This, remember, is peak tourist season in Goa. This is the middle of December. Tourists are here. And this particular resto bar is one of the more famous and high footfall areas in Arpora in Goa. And we're now being joined by Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant on the massive fire tragedy in which 25 people have lost their lives. Sir, you yourself visited the incident spot, the nightclub Birch by Romeo Lane. What did you witness and what were the lapses and what was the exact cause of this massive inferno? मैं कल रात 2 बजे वहाँ पे खुद पहुँचा. मैंने खुद वहाँ पे देखा. यानी जो लैप्सेस है उसके लिए वी हैव ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के लिए कहा है. और द रेस्टोरेंट द पुलिस हैव अरेस्टेड द जनरल मैनेजर ऑफ दैट एंड 2-3 पीपल ऑफ दैट क्लब. वी आर फाइलिंग द एफआईआर अगेंस्ट द क्लब ओनर आल्सो. द 25 डेथ वहाँ पे हो चुकी है. 6 लोग एडमिटेड इन द गोवा मेडिकल कॉलेज. उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रही है. हमारी तरफ से हैंडस्पोर्ट इस तरह का इंसिडेंट न हो इसलिए पूरी प्रिकॉशंस हमारी सरकार की तरफ से ले जाएंगे. जी सर, काफी सवाल उठ रहे हैं सेफ्टी ऑडिट पे. क्या सेफ्टी ऑडिट रेगुलरली कंडक्ट किया गया था? क्या लास्ट सेफ्टी ऑडिट हुआ था? जब मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट हाथ में आ जाएगा तभी उसके बाद करना ठीक रहेगा. एट प्रेजेंट तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का रिपोर्ट 1-2 दिन में कल तक मिलेगा. उसके बाद में इसके ऊपर बात करना उचित रहेगा. सर, ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं थी जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से इतने लोगों की मौत हुई. एस्केप रूट्स भी मार्क नहीं थे. प्रिलिमिनरी वैसा ही लग रहा है कि वेंटिलेशन के वजह से वेंटिलेशन नहीं था इसलिए सफोकेशन वजह से हुआ है. लेकिन जो कुछ है उनके खिलाफ जो तरह कार्रवाई करनी चाहिए वो हमारी सरकार की तरफ से हम करेंगे. सरकार और क्या कदम उठा रही है जिससे कि ऐसे और इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो? हाई लेवल कमेटी की मीटिंग मैंने रखी है और इस तरह के जो इंसिडेंट्स न होने के लिए हम सेफ्टी ऑडिट करेंगे और जिनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है इनके रेस्टोरेंट और क्लब्स बंद रहेंगे. सर, ये एक काफ़ी बड़ा नाइट क्लब था जहाँ पे ये पूरी घटना हुई है. बर्च बाय रोमियो लेन काफ़ी बड़ा नाइट क्लब, काफ़ी पॉपुलर नाइट क्लब है. अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है तो गोवा में जाने कितने नाइट क्लब्स हैं, कई छोटे लेवल के भी नाइट क्लब्स हैं. तो काफ़ी सवाल सबके मन में अब उठ रहे हैं. नहीं, ईच एंड एवरी नाइट क्लब हो या रेस्टोरेंट हो उनके लिए एनओसी, सेफ्टी एनओसी लेना और फायर एनओसी लेना कंपलसरी है. लेकिन जिन किसी ने समझो नहीं लिया है तो उनके नाइट क्लब्स और सेफ्टी ऑडिट होने के बाद बंद रहेंगे. क्या कोई सख्त नए लॉज भी बनाए जाएंगे इस पूरे चीज को इंश्योर करने के लिए? हैंडस्पोर्ट इस तरह के कोई नाइट क्लब हो या इस तरह का प्लेसेस हम विदाउट फायर एनओसी चलाने के लिए नहीं देंगे. सर, हमें जानकारी मिल रही है कि ओनर और जनरल मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया है. क्या एक्शन लिया जाएगा एंड हाउ विल यू इंश्योर जस्टिस? इनके जनरल मैनेजर और बाकी लोगों को अरेस्ट किया है. उनके ओनर को भी हम अरेस्ट करेंगे और इनके खिलाफ सख्त एक सेफ्टी नॉर्म्स हम जो फॉलो नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हॉलिडे सीजन आने वाला है, पीक सीजन होता है गोवा टूरिज्म के लिए, आपको क्या लगता है कि इस पूरे इंसिडेंट से काफी हैम्पर हो सकती है वो इमेज? तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सभी सेफ्टी ऑडिट करके जिसके पास फायर एनओसी नहीं है उसके क्लब्स हम बंद रखेंगे और अदरवाइज रेस्टोरेंट जो सेफ्टी ऑडिट करके जिनके पास एनओसी है वो खुले रहेंगे. इसलिए कोई यानी major precaution सरकार की तरफ से लिया जाएगा. See, we have been on record for quite many years that lot of these business houses in the name of nightclubs, dance clubs, spas, massage parlors, all these are illegally operating without permissions. And when we say the double engine Sarkar, it's now very clear. If a Goan wants to start a business, he has to go through the whole process of taking permissions and he goes through this turmoil. However, when somebody from Delhi or any other person comes here to do business with the blessings of the top engine, the BJP Sarkar, they don't require any permission, they don't take permission. There have been absolute violations of permissions. Even the Chief Minister said there were no permissions.